Namaskar, and I'm very pleased to be here and so excited to see so many people here who are interested in stock market. And yeah, हर जगह इतना excitement नहीं होता है. Maybe it is the market condition, maybe the awareness which is coming up about the markets. And actually equity is becoming, I mean, people are realizing a little later. What I realized in 80s, 1984, 85, I'm a chartered accountant. I started my career as chartered accountant in 83. I am a farmer's son from Raipur, Chhattisgarh. So I don't have any background in stock market. So I have not got a parental advice to do stock markets and all. My father was a farmer and he had no understanding of what is stock market. In my family, nobody has, even now there is no understanding of stock market. I've got 6 brothers, but they're clueless. So, and my wife is even worse than that. So, so you know, so at home, I'm alone in the sense that about the stock market. My son is also as passionate about the stock market. So, you know, this stock market is a junoon. You know, it's a you have to have, it's a सोच. आपकी समझ होनी चाहिए इसमें. इसमें ना तो प्लांट लगता, मशीन लगता, कुछ नहीं. 25-50 पुस्तक पढ़ लिए बस हो गया, ऐसी वाली बात है. इसमें मतलब आपकी सोच बढ़नी चाहिए इसमें. और ये जो एक होता है कि प्राइस एंड वैल्यू. Price is what you see in the market. Say Reliance, Telco, Tisco. Every day you see the quotation of the price. But price is what you pay and value is what you get. So there is a difference between price and value in the stock market. You have to understand, we are busy in trying to figure out what is the value of it. You know, जैसे आप डायमंड खरीदने जाते हैं तो डायमंड आपको 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए डायमंड है, लेकिन वो है कितने का, वो जौहरी को समझ है, हमको वो समझ नहीं, हमारे तो पत्थर है वो. सो वो 10 लाख का जो सामान दे रहा है वो 7-8 लाख का है कि 70-80 हज़ार का ही है, वो समझना जो है वो बहुत गहराई की चीज़ है. एंड दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इन स्टॉक मार्केट. कि आपको बजाज फाइनेंस आपको 60-65 हज़ार करोड़ में मिल रहा है, तो 65 हज़ार करोड़ में बजाज फाइनेंस सस्ता है महंगा है, वो आपको समझना पड़ेगा. एंड दैट इज़ कॉल्ड वैल्यू रिसर्च, आई मीन रिसर्च इन वैल्यूज़. एंड ये चीज़ जो है मैंने चालू किया 83 में. मैं पास किया CA और उसके बाद फिर 2-2.5 साल मैंने रिसर्च किया, इक्विटी रिसर्च. उस समय इक्विटी रिसर्च प्रोफेशन नहीं होता था. किसी को मालूम नहीं था क्या होता है, पता नहीं, मैं कुछ पुस्तकें पढ़ा था, कहीं से आइडिया लग गया था, तो मैंने इक्विटी रिसर्च किया. और उस समय न तो बुक्स होते थे, न ही न्यूज़पेपर होता था, इंटरनेट तो था ही नहीं, पब्लिकेशंस नहीं थे, मैगजीन्स नहीं थे. सो द ओनली वे टू लर्न अबाउट इक्विटी रिसर्च वाज रीड द बैलेंस शीट्स. सो आई यूज टू कलेक्ट बैलेंस शीट्स. I used to have 200-300 balance sheet on my bedside. And my weekend job was to go and collect balance sheets and read it through the week. So I used to read page to page, all the balance sheets. So by 2088, yeah. So now it's good. By 1988 and 87-88, actually, I knew every single company listed and how much is the capacity, how much is the production, what is the profit, what is the share of cost structure, profit structure, everything I was knowing. And there was no Excel sheet also. Computers were not there. So you had to do it mentally. And that is my biggest asset. Today, I know the entire market. I mean, not so much the technology companies, but the old companies. I know their family background, I know where their plant is, what they do, what they produce, whether they are good guys, bad guys. वो सब ख्याल रहता है हमको. सो दैट इज़ द काइंड ऑफ पैशन, तपस्या एंड जुनूनी एक इंटरेस्ट आपको स्टॉक्स में लेना पड़ता है.